आज कॉर्पोरेट रेडार में टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग इनके मैनेजमेंट से हम करेंगे बात। अब थोड़ा कंपनी के बारे में आपको बता देते हैं। 1963 में कंपनी की शुरुआत हुई। टेक्नो इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रा स्पेस में काम करती है, साथ ही ये स्मार्ट मीटर सोल्यूशन सेक्टर में भी कामकाज करते हैं। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम स्मार्ट मीटर्स पर अपडेट लेंगे, उनकी मौजूदा ऑर्डर बुक किस प्रकार की है, क्षमता विस्तार के किस प्रकार के प्लान्स हैं, कैसा रोड मैप है, आगे की ग्रोथ आउटलुक, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ आज शामिल हो चुके हैं कंपनी के एमडी पद्म प्रकाश गुप्ता। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो बिजनेस के बारे में, ऑनगोइंग बिजनेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। 12 अगस्त को नतीजे आए थे, हमने देखा कि वहां पर थोड़ी निराशा हाथ लगी। एबिटा, प्रॉफिट, रेवेन्यूज पर नजर डाले तो वाई आधार पर गिरावट दिखी है। किस प्रकार का, अगर एक कोई हाईलाइट आपको रखना हो बीते क्वार्टर का कंपनी का, तो किस प्रकार का रखेंगे सर? ओवरऑल डिमांड कैसी रही है? We have progressed a lot. जनरली हमारी तरह के ईपीसी बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत सही नहीं रहते हैं, तो उसमें जो भी नए बिजनेस आते हैं उनको इंजीनियरिंग करना, डिटेलिंग करना, फील्ड रेडी करना, उसमें ऑलमोस्ट 5-6 महीने लग जाते हैं। When you see the project to be active, last quarter was largely meant to clean up the slate of the old executed contracts or nearly complete contracts. So by and large, our liquidity position improved a lot in the last quarter. We were able to collect more money, pay out the creditors. Debtors were all-time low. There were no more than 135 CR, as well as creditors also came below to 250 CR. तो इस तरह से काफी improvements हैं, but our future is very bright. We have already booked business almost worth more than 3,200 CR now, and we expect to book another business of 1,500 CR by close of the year. तो ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि our order book has bounced back, and generally ये एक order book 2 साल में execute होती है। तो we definitely see कि going forward growth will be no less than 20-25% in the top line per year, and by 25 our top line should be double of present levels. जो भी 3-4 साल में top line grow नहीं कही, despite outperforming on the bottom line, we'll continue to carry on that growth in future to compensate for lost growth also of last 3 years. जी मिस्टर गुप्ता सर, आपने जो ऑर्डर बुक के नंबर का जिक्र किया, दिस इज इंक्लूडिंग डेटा सेंटर, ट्रांसमिशन, एफजीडी, स्मार्ट मीटर, सबको इंक्लूड करके सर आपने बताया वो ऑर्डर बुक का फिगर रखा है सर? नहीं मैम, हमने जो ऑर्डर बुक आपको बताया, इट इज ओनली मेंट फॉर थर्ड पार्टीज. इट डज नॉट इंक्लूड डेटा सेंटर, व्हिच इज आवर ओन project being developed by us through our own wholly owned subsidiary. तो उसकी हम accounting nearly intend doing closer to the revenue stream. Till then we will only hold in the books as a work in progress. But whatever top line we are talking is related to third party businesses. अच्छा, तो अभी सर करंट ऑर्डर बुक, अगर इन सबको, सारे सेगमेंट्स को इंक्लूड करके देखें सर, क्या है आपकी करंट ऑर्डर बुक की स्टेटस सर? It is 3,200 plus CR as of today, ma'am, which includes about 1,500 CR on FGD, which are called desulfurization solutions in thermal powerhouses, where air pollution has become a major concern in the country. Then it includes our transmission system projects. It includes our AMI scope. It includes our system strengthening scope, and as well as it also includes our operationally engagement in non-power sector, which are power guzzling sectors like aluminium. सर ये जो आप, जी सर अपनी बात पूरी करिए। यस सर, I am through, ma'am. No issue. सर ये जो आप 32 करोड़ के ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, इसके एग्जीक्यूशन का कोई टाइमलाइन है या फिर ये ऑनगोइंग है, अभी चलेंगे? नहीं मैम, जनरली एवरी ऑर्डर हैज ए टाइमलाइन. दे आर जनरली नो मोर देन 2 to 2.5 years, and it is a time bound scheme. All these projects have to be completed by December 24. Whatever we have in hand,
And some of the projects we have to complete by December 23 in transmission space, which we have got from Sterlite, Adani, Power Grid on an ongoing basis. ठीक है सर। सर अब थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है RDSS विच इज पॉपुलरली नोन, ये हम जानना चाह रहे थे सर कि आपकी कंपनी के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, गिवन द फैक्ट कि सरकार की योजना है कि आगे आने वाले 5 सालों में इसमें 3 लाख करोड़ का खर्च किया जाए। तो मैं ये समझना चाह रही थी कि आपकी जो कंपनी है किस प्रकार से आपको मदद मिलेगी, कोई रेवेन्यूज में टर्न अराउंड किस प्रकार का आता आप देख रहे हैं? मैम ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कीम है गवर्नमेंट की, आफ्टर नॉट सीइंग मच इम्प्रूवमेंट आउट ऑफ द वेरियस स्कीम्स वी हैव गॉन थ्रू, APDRP, रूरल दीन दयाल उपाध्याय स्कीम्स और सौभाग्य स्कीम एंड व्हाट नॉट, and this is a very balanced scheme in terms of system strengthening and sector reforms. इसमें 3 लाख करोड़ का प्रावधान है, and we will be targeting no more than 2% of this scheme as a part of our operations, because this needs a very strong management to deliver projects. They are spread over projects over a given district level operations in each area. So we have been part of it for last 15 years in different forms, and we'll continue to be part of it. So we are definitely, it will add to the top and bottom line both of the company. Okay. In addition to whatever we are doing on pollution, air pollution, or we are doing in transmission space, or AMI space. Rather, AMI also going forward is going to be part of RDSS. ठीक है गुप्ता सर, एक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव की ही बात कर लेते, क्योंकि गवर्नमेंट तकरीबन 20 करोड़ 200 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को इंस्टॉल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। मार्च 2024 तक वो ये टारगेट नंबर अचीव करना चाहते हैं ताकि डिस्कॉम का जो लॉसेस है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। आपकी कंपनी के लिए सर ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? मैम, इट्स अ वेरी ब्लेंडेड स्कीम, because they have classified both as a capex and opex. Looking on the financial health of the discoms, we are not very upbeat on the opex part of the scheme. But wherever capex scheme happens, we'll be part of it. States like Tripura, J&K, and something more in other states also, like Power Grid. We'll be keen to be part of, but by and large we'll be limit ourselves to the capex based program of the government, which is no more than, to my mind, 15-20% out of the whole scheme. Okay, तो इनमें से सर अभी कोई ongoing आपके capex प्लान का हिस्सा है या you're looking forward to it? अभी इनको आना बाकी है? नहीं मैम, we are already executing a 2 lakh meter scheme for the city of Srinagar and Jammu, which is nearly 60% complete by now. Achha. And we hope to complete the balance by December this year. And further schemes are being extended as a scope by the local governments, as per the success achieved by them on the revenue collection and all that. Okay, ठीक है सर। सर कंपनी हैड प्लान्स टू इन्वेस्ट की अराउंड $100 करोड़ के आसपास का निवेश डेटा सेंटर्स, कुछ बड़े शहरों में की सिटीज में डेटा सेंटर्स सेटअप करने के प्लान रहे हैं, उस पर सर क्या अपडेट है फिलहाल? मैम, वी आर लिटिल strongly believe in the business of data center because it is power centric solutions, power guzzling solutions, and these data centers are also designated in megawatt terms additionally. So we want to do at least 2 or 3 data centers, say around 100 megawatt by 25 in 3 cities, mainly Kolkata, Chennai and Gurgaon, and definitely 250 megawatt by 2030. कोविड के चलते कंट्री में काफी कुछ अपसेट हुआ है, इंडस्ट्री भी सफर की, एम्प्लॉयमेंट में भी हुई, इकोनॉमी में भी हुई, बट वन गुड थिंग वी हैव अचीव्ड इज द डिजिटाइजेशन. बिजनेसेस हैव मल्टीपली ग्रोन इन डिजिटल स्पेस, एंड लाइक आज आप एजुटेक बोले, बेस्टेक बोले, फिनटेक बोले,
ई कॉमर्स बोले, एंड गवर्नमेंट की अपनी जो प्राइवेटाइजेशन डाटा की पॉलिसी है, they have all encouraged these data center, and technology improvement also will compel many good corporates to park their data centers in third space than having kept in place. So we are quite upbeat that India will have at least 2 gigawatt capacity in place of half gigawatt now by 25. And at least 5 gigawatt by 2030. सर मैनेजमेंट ने हमने जब नंबर्स आते हुए देखे थे लास्ट, तब 20 से 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है, तो मैं जानना चाह रही थी कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव करेंगे या यू विल स्टिक टू दिस गाइडेंस? No ma'am, we'll stick to it, and it is likely to be improved upon, and but major growth will happen in Q3 and Q4. सर मार्जिन पर भी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नंबर्स आए उसमें मार्जिन में 100-150 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। अब चूंकि हमने देखा है कि अपने पीक से रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, मार्जिन फ्रंट पर सर गोइंग फॉरवर्ड कुछ सुधार? Ma'am, we are hopeful to improve on it, but as far as guidance is concerned, we'd like to maintain 12.5% and outperform. And we still don't know what global situation अभी भी काफी volatile है, uncertain है. So we are always conservative by background as an organization, and trust more in holding on to what we tell to our investors, reputed and prestigious investors. Improvement on guidance is always a happiness, man. Of course. Point taken, sir. Not otherwise. जी सर, एक आखिरी सवाल, ग्रीन पावर सर, क्योंकि कंपनी की जो कुल आय होती है उसमें 8% का योगदान है, तो सर जरा बताइए कि उस फ्रंट में ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं आपके? मैम, we have been I will first say that we were the first IPP in setting up a wind power unit in the country in 910. By 200 megawatt when people used to do it only for tax break. We brought all these policies in the country like REC, RPO and GBI and whatnot, because so that systems can be pro society, and benefits are provided by government only when commitments are met by the developers. It has been, we have been lead in carbon credits also, but somehow post protocol a lot of things have changed. In our time, 910, the renewable power was 2 to 3 times costlier over conventional power, which today is only 0.8. So we are always a organization which believes in asset light status, ma'am. And we'll continue to do that. So we definitely don't see larger capex in generating capacities. We have been front runners in creating green corridors in the country. Yes, sir. Out of World Bank loan, JBIC loan and ADB loans for power grid and state utilities. So we will continue, and we were also developer in TBCB. We developed assets worth 5,000 CR over last 5-7 years, and divested them to different InvITs like InGrid, China Light and Power. And so on. Similarly, data center also we will have a very reputed partner from the US to do the O&M and also to take care of the capex. But we are keen is to prove our capability as a EPC, as a technology engineering based EPC, high-end EPC in power sector solutions and power guzzling industries like. Point taken, sir. और खासतौर से अभी जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से, पावर क्राइसिस से जूझ रही है, ऐसे समय में आप अलग अलग सेक्टर्स में जो केपेक्स प्लान ला रहे हैं, काबिले तारीफ है, और आगे भी सर इन पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के ग्रोथ प्लान्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।